Hey guys, it's Shilpa here and welcome back to my channel. And if you guys want to know how to achieve this beautiful, easy summer glowy makeup look, then please keep on watching. So first of all guys, welcome to Bare Skin. For the primer, I'm using Blue Heaven Studio Perfection Primer. It's an oil-free silicone-based primer. So I have taken 4-5 drops and then I'm just gonna warm the product between my finger and then just slightly tapping it on my face, especially on my T-zone area because I have super oily skin during summertime. So basically what primer will do, अगर आपका textured skin है तो वो उसको smoothen out करेगा, and if you have oily skin like me तो ये थोड़ा oil को भी control करता है. नेक्स्ट अप फॉर द फाउंडेशन आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन आजकल मेरा फेवरेट है क्योंकि ये स्किन को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं दिखाता. सो आई एम यूजिंग दिस फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्पैचुला इटसेल्फ, और मैं अपने पूरे फेस पे इस फाउंडेशन को इवनली अप्लाई कर दूंगी. नाउ टू ब्लेंड दिस फाउंडेशन इन, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश. दिस ब्रश इज़ वेरी डेंस और इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं. ज़्यादा टाइटली भी पैक्ड नहीं है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं आपकी फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए. और ये ब्रश है अमेज़ॉन से एंड इट वाज लाइक फॉर 2 और 300 का एक सेट आया था जिसमें आई गेस 10 ब्रशेस थे. सो आई एम जस्ट डैबिंग द फाउंडेशन इनटू माय स्किन. यू डोंट हैव टू ड्रैग द फाउंडेशन, यू हैव टू डैब और पुश द फाउंडेशन इनटू योर स्किन. टॉकिंग अबाउट कवरेज ऑफ दिस फाउंडेशन, द कवरेज ऑफ दिस फाउंडेशन इज़ काइंड ऑफ मीडियम टू फुल कवरेज. आप इसको डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हो, और मैंने इतना फाउंडेशन नहीं यूज़ करा बिकॉज मुझे फुल कवरेज नहीं चाहिए था. आई एम ऑल्सो गोना यूज़ कंसीलर. सो या अगर आपको बहुत ही फुल कवरेज चाहिए तो आप और ज़्यादा फाउंडेशन लगा सकते हो. सो फॉर द कंसीलर आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड कंसीलर, एंड फॉर ऑल द शेड नेम्स एंड डायरेक्ट लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू चेक. सो दिस इज़ अ रीसेंट परचेज गाइज. मैंने अभी इस कंसीलर को खरीदा है एंड आई डोंट नो व्हाई आई हैवंट परचेज दिस कंसीलर अर्लियर बिकॉज इट्स अमेजिंग. सो you can totally skip this step if you're blessed with flawless skin, but I'm using this concealer to conceal my imperfections. So I'm not applying this concealer on my entire face. I'm just applying this concealer around my under eye area and also on my acne spots. And to blend my concealer in, I'm using this brush. It's a dome shaped brush and it has that tapered end and it's very precise, perfect for blending your concealer. So this brush is very stiff and it does not have much bounce. तो ये concealer के लिए बिल्कुल perfect है क्योंकि हमारा under eye area बहुत कम होता है, and उसके लिए अगर आप fluffy brush use करोगे तो वो जो भी प्रोडक्ट होगा उसको मूव कर देगा, एंड हमें मूव नहीं करना प्रोडक्ट, हमें ब्लेंड करना है. सो आई ऑलवेज प्रेफर माई कंसीलर शेड टू बी एग्जैक्ट मैच फॉर माई स्किन, बिकॉज अगर आप लाइट शेड ले लोगे तो वो आपको नेचुरल इफेक्ट नहीं देगा, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड इफेक्ट शो करेगा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट योर अंडर आई एरिया, एंड टू सेट माई अंडर आई एरिया आई एम यूजिंग दिस सिवाना कलर्स मेकअप स्टूडियो पैलेट. आई एम पिकिंग दिस बनाना शेड, dusting off the excess and then slightly dabbing it around my under eye area. So why this step is important, ताकि आपका concealer crease ना करे and वो काफ़ी लंबे टाइम तक set रहे. You can use any loose powder or compact powder also. I have used banana powder because banana powder में एक yellow tint होता है and that will just gonna brighten my under eye area. And to set rest of my face, I am using Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. And I am using this flat brush which is from Wet n Wild, and I am only going to set my T-zone area. I am not going to set my entire face because वो बहुत ज़्यादा matte हो जाएगा, and we are going for a glowy makeup look. So yeah. एंड जो भी प्रोडक्ट मेरे ब्रश में रह जाएगा आई एम गोना ड्रैग टूवर्ड्स माई नेक सो दैट एवरीथिंग लुक्स इवन. नेक्स्ट अप फॉर माई आईब्रोज आई एम यूजिंग दिस मिस क्लियर आईब्रो पेंसिल. ये बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है एंड आई गेस दिस वॉज जस्ट फॉर ₹125 समथिंग. जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. So firstly I'm gonna brush my eyebrows in upward direction and then start filling it in. If you have very fuller looking eyebrows तो आपको बहुत ज़्यादा eyebrows को fill in करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ define करने की ज़रूरत है. and मेरी eyebrows थोड़ी uneven हैं due to this whole quarantine period, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा fill करना पड़ रहा है. but if you have fuller looking then you are good to go. You have to fill in with small strokes. आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, बहुत लाइट हैंड रखना है. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो इट विल लुक मोर अननेचुरल और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी आईब्रोज पे सेटल हो जाएगा. आफ्टर फिलिंग योर आईब्रोज मेक श्योर टू ब्रश देम ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. जंपिंग टूवर्ड्स माई आईज आई एम यूजिंग दिस पैलेट. दिस पैलेट इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड.
And I'm going to use this grayish pink shade. It's a very pretty shade. For my eyes, I'm using this brush. It's very fluffy and soft, and you can see it's slightly tilted from one side, so it would be perfect to blend the color. So the shade I am picking is a very subtle and matte shade, perfect for everyday wear. And if you like some kind of a color on your eyelid, then you should totally check out this palette. So basically हमें करना क्या है, हमें कलर को आउटवर्ड से इनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, जस्ट लाइक वाइपर मोशन फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड. एंड ऐसे करते करते हमें तब तक ब्लेंड करना है जब तक कोई एजेस ना हो और कोई हार्श लाइंस ना हो. एंड आई एम रिपीटिंग द एग्जैक्ट सेम स्टेप ऑन माई अदर आई एज वेल. एंड जो भी ब्रश में रह जाएगा उसको मैं आईलाइट के बीच में टैप कर लूंगी सो दैट एवरीथिंग लुक्स इवन. एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस स्मॉल फ्लैट ब्रश. इट्स अ वेरी स्मॉल फ्लैट ब्रश. ये ब्रश किसी भी पैलेट के साथ फ्री में मिल जाता है, ये वो वाला ब्रश है. नाउ आई एम पिकिंग दिस शैम्पेन शेड फ्रॉम द सेम पैलेट एंड गोना अप्लाई इनटू माय इनर कॉर्नर्स. ये बहुत ज़्यादा पॉप देगा आपकी आई लुक को और बिल्कुल आपकी आई लुक बहुत ग्लोई लगेगी और ऐसा लगेगा आपने पता नहीं कितना टाइम लगाया है इस आई लुक को करने में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग दिस फ्लैट शेप्ड टेपर्ड ब्रश एंड इट्स फ्रॉम प्रो आर्टे. उनके ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. एंड नाउ आई एम यूजिंग द सेम ग्रेइश पिंक शेड जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था और उसे लेकर मैं अपनी लोअर लैश लाइन को स्मज आउट कर दूंगी. सो व्हाट हैपन्स बाय स्मचिंग योर लोअर लैश लाइन, उससे आपकी आईज को थोड़ी डेप्थ मिल जाती है एंड ऑल्सो योर आईज विल लुक अवेक. You can see the difference between both my eyes, and now I'm going to repeat the exact same step on my other eye as well. So for mascara, I'm using L'Oreal Volume Million Lashes Mascara, and it's my favorite mascara, guys, and trust me, you won't regret after buying this one. So go ahead and buy this one ASAP. I don't like when mascaras makes your lashes clumpy, जो आपकी lashes को जोड़ दे. And L'Oreal का Lash Paradise वाला mascara है, I guess, वो lashes को जोड़ देता है and it's really a difficult task to remove that mascara. So ये mascara बहुत ही natural and everyday kind of look देता है. So for contouring, I'm going to use the same palette again. And for contouring, I'm using this Wet n Wild contour brush. ये specifically contouring के लिए है, थोड़ा सा slant है, fluffy भी है blend करने के लिए, तो ये perfect रहेगा. Picking up this contour shade, dusting off the excess, और मैं इसको बिल्कुल अपने cheeks के बीच में place करूँगी and then start blending it in. Always start with very less product and then slowly start building it up. And remember guys, contour shade always has to be 2 or 3 shades darker than your skin tone. So what will contouring do? Contouring will bring back warmth to our face. फाउंडेशन लगाने के बाद हमारा फेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता. सो टू ब्रिंग बैक दैट डायमेंशन एंड शेप टू योर फेस हम कॉन्टोरिंग करते हैं. एंड ऑल्सो आई एम गोना कॉन्टोर माई जॉ लाइन एज वेल एज हेयर लाइन. एंड फॉर माई ब्लश आई एम गोइंग टू यूज 2 products. The first one is Nykaa Mini Lipstick and just dotting it all over my cheek area, chin and little bit on nose. To blend it in, I am using this beauty blender. And actually guys, ये lipstick थोड़ी dry हो गई थी, so it was quite a difficult task to blend it. So I did it off camera. And now to make my cheeks look more rosy and pinky, I'm gonna mix these 2 shades. And for my blush, I'm using this big fluffy brush. It's very big, bouncy and fluffy. And then I'm gonna mix both the shades and gonna apply all over my cheek. For summers, I guess it looks really beautiful to have a pinkish flush of color on your cheeks. And if you feel like you have gone too overboard with your blush, you can anytime use your foundation brush and then just dab it around your cheek area. It will gonna pick up all the excess amount. For highlighter, I'm going to use Maybelline Master Strobing Cream. It's a very subtle highlighter and it looks very beautiful on skin, and it's a cream based highlighter, that's why it looks more natural. अगर आपको वो पैन वाले हाइलाइटर नहीं पसंद तो आप ये क्रीम वाला ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत सटल होता है, बहुत चंकी ग्लिटर्स नहीं है इसके अंदर, बहुत नेचुरल सा ग्लो है इसके अंदर. और सेकेंडली, जितना ज़्यादा आप अमाउंट लगाओगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, अगर कम अमाउंट लगाओगे तो कम इंटेंसिटी होगी, एंड आप ब्लेंड करके उसको कंट्रोल कर सकते हो. एंड इट ऑल्सो डज नॉट हैव दैट चंकी ग्लिटर पार्टिकल्स. अगर आपको सन किस्ड सा ग्लो चाहिए एवरीडे बेसिस पे तो भी आप इसको लगा सकते हो. एंड ऑल्सो इट्स रियली अफोर्डेबल, आई गेस 300 और 400 का था ये. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस L'Oreal Root Signature Lipstick. The shade name will be in the description box. It's a very stunning summery color. It's a pinkish coral shade and it will definitely gonna look good on dusky and tan complexions, but not for deeper complexions.
So that's the final look for you guys. Do let me know in the comment section what you think. And also I try to make this video a little more informative rather than doing just makeup. And also comment down below what more content you want to see on my channel. Till then, make sure to subscribe to my channel, hit the notification. Bye.